Yeah. तो पेज पर आंसर्स पे थे ना, पानी की आंसर्स पे थे अभी अपन। हाँ हाँ एक मिनट। कंपेयर सेल्स प्राइस। हेलो, कॉलवर हाँ आहे एक मिनट एक मिनट. जरा कॉलवर आहे मी. आपण जेव्हा तू जेवून घे पाहिजे तर. रिसीवेबल ड्यू फ्रॉम एल्ला को. हाँ तो पढ़ना स्टार्ट कर. अच्छा, तुझे क्या लग रहा है बेसिकली इसको तुझे रिवैल्यू अपने रिसीवेबल्स के लिए सिग्निफिकेंस से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ढूंढना है. हम्म. So compare Purrfect Pro's major customer. One of Purrfect major customers, Ella, operates a chain of restaurants 23 across the country. There have been reports in the press several months that Ella Co's sales and profits have been falling. And in March 15, Ella Co announced that 11 of its stores were to be closed on May 15. As at 31st March 15, Purrfect trade receivables include 2.6 outstanding from Elaco and no allowance has been included at the balance of the year end. Discuss with the management of Purrfect Co. that why no allowance has been made for the same. Then this Elaco, एक minute, huh? Recalculate the trade receivable and Trade, check in the pre-year end. So review post year end compare cash post year end receipt, and cash receipts from Elaco if any payment has been made by Elaco after the year end. और उसके बाद फिर एक ये हो जाएगा कि कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग outstanding figure affect the materiality of the company. discuss with the ये मैं खुद से जोड़ रहा management. हूँ पता नहीं. Review board minutes so as to discuss with the management the हाँ. likelihood of yeah whether they expect Elaco to pay in the near future. और स्टेटमेंट हो गया कंपेयर. Review ये हो गया ना aged कि old कंपेयर. receivable listing. Review aged old receivable listing of Ella and Co. So as एंड to डिस्कस verify. व्हाई देयर इज. To review if there are any slow moving items that should be written down. नहीं नहीं ये इन्वेंटरी का पार्ट है स्लो मूविंग. क्या? नहीं इसका भी पार्ट है यार, इसका भी पार्ट है, ऐसा क्या कर रहा है? स्लो मूविंग गुड्स नहीं होगा ना वो स्लो मूविंग डेटर्स होगा. स्लो मूविंग रिसीवेबल्स बोला मैंने शायद, इन्वेंटरी बोला तो सॉरी, रिसीवेबल्स मेरे को बोलना था. Obtain written representation from the management confirming that they agree with the 2.6%. ये बोला कि अपना कंपेयर विद द प्रायर ईयर दैट द एनी चेंजेस इन द रिसीवेबल लेजर. I don't know. एंड तूने अलाउंस वाला बोला क्रिएट एन अलाउंस. Obtain चला schedule जाए. and obtain schedule and cast it so as to verify the accuracy. Breakdown of the trade receivable Now the trade receivables. and compare it with the current year. देख लेते हैं एक बार. Review correspondence with Okay. airline coach to establish if there are any discussion about the payment difficulties, whether airline co intends to fully settle the outstanding amount. Review age of receivable debt. Review the credit terms and consider if any allowance is required. Review post year and receipts from airline co to establish how much of the debt was recovered by audit completion date and assess how much of the year end balance remains outstanding. Inspect the board minutes
verify whether any significant concerns related to payment. ठीक है चल मैंने ये भी बोला गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट रिव्यू अच्छा बोर्ड एक मिनट्स मिनट तो review the age of outstanding that will discuss its concerned credit control to establish it if it has exceeded the credit terms and if an allowance is required to review post year end receipts from company to establish how much of the debt is receivable to the audit completion date and to assess how much the year is remaining. Inspect board minutes to identify where the significant concern in relation to the payments, discuss with the management and know why no allowance has been maintained. पर अपने भी ज्यादा पॉइंट्स वैलिड थे ज्यादा पॉइंट्स वैलिड थे क्योंकि ये लोग ने आउटस्टैंडिंग ज्यादा बोला है कोई ना एज ऑफ आउटस्टैंडिंग देन रिमेनिंग बैलेंस कितना है तो ठीक है contamination of legal claims. A batch of canned cat food had been contaminated with insecticide, which could be harmful to the cats. The batch had been dispatched in November 14 to 494 to 247 retail stores. By 31st of March 15, Purrfect Co. had received a legal claim totaling to 1.9 million from the customers whose cats had been eaten the contaminated food. Review correspondence from the company's legal advisor. If the company does not have a legal advisor, then contact a legal advisor. Then take permission from the client to contact a legal advisor so as to ascertain the valuation. the The value of the claim likelihood of the possible claim likelihood of the claim being being successful. discuss with the management there is a need for any allowance to be made Discuss with the or management the that whether the corrections have been made on the contaminated food and should the entity expect any potential legal claims in the future. the sale of the contamination should be removed from the sales registrar sorry should be removed from the Revenue revenue बराबर और एक नहीं एक मिनट हाँ there should be तू रिमूव there क्यों is क्या करेगा हुआ रेवेन्यू से तेरे पास ऑलरेडी क्लेम्स है ना रिमूव नहीं करेगा तू देख जब भी तूने अपने बुक में माल भेजा तूने सेल्स का एंट्री मारा ना तो रेवेन्यू बढ़ा अभी तेरे को मालूम है कि वो डैमेज है गुड्स तेरे को वापस से मंगवाने हैं तो तू रेवेन्यू अपना सेल कम करवा देगा तेरे को ओवर वापस स्टेटेड है तेरा मंगवा के सेल तेरे को करना क्या लेकिन वापस मंगवा के भाई तू डैमेज गुड है तो वापस मंगाएगा कंपनी में डैमेज गुड्स है ही नहीं ना देख मैंने समझ तेरे क्या को है गंदा क्या माल बेचा मैं समझ तेरे को गंदा माल हाँ बेचा और तूने मेरे को हाँ स्यू किया तो मैं तेरे को पैसे दूंगा लेकिन मैं उसके लिए मेरे रेवेन्यू से अपना ये नहीं कम मतलब क्या बोलते हैं अरे सुनना मेरे भाई तू तू कंज्यूमर है तू मेरे यहाँ से 10 रुपए का माल ले गया था खराब रहता तो मेरे पास 10 रुपए तू वापस आके बोलेगा ना भैया तूने गलत माल यूज किया है मेरे को 10 पॉइंट नहीं वापस है करो पॉइंट मैं गलत 10 है को वापस ले लेगा देख ले चाहिए तो आंसर देख ले पूरा पढ़ ले पूरा रेवेन्यू के बारे में लोग हाँ बात ही नहीं करेंगे कहीं पे मेरे को पता है क्योंकि मैंने ऐसा चल किया भी ठीक है हुआ है मेरा पॉइंट वैलिड नहीं होगा शायद लेकिन पॉइंट में दम है ठीक है तो अपन देखते हैं ना बाद में आंसर देख लेते हैं ISA 37 मैंने ठीक है देख लिया सोल्यूशन में मैंने ISA 37 देख लिया फिर मुझे पागल लगेगा गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट के बारे में बात कर सकते हैं अपन हो रहा है हो रहा है टोटल एसेट नहीं टोटल प्रॉफिट discuss with the management whether the legal claims of हाँ 1.1 million would create any going concern impact on the company फिर review if any post year end sales have been made for the canned food products and should the company expect any potential legal future claims for the same रिकैलकुलेशन
Recalculation of the legal claim, it is accurate or still incomplete. मैं भूल गया था यार, बराबर है, Hmm. बराबर है, रिकैलकुलेट। हाँ हाँ, देयर शुड, एक मिनट, नहीं ये तो लीगल क्लेम है, नहीं नहीं, इसमें इंश्योरेंस कंपनी नहीं आएगी ना, बिकॉज नहीं, नहीं 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 आएगी, नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अ, अपन ने कस्टमर से करस्पॉन्डेंस नहीं बोला है, देखते हैं। और रिव्यू कस्टमर करस्पॉन्डेंस टू एस्टैब्लिश द डिटेल्स ऑफ द क्लेम्स एंड द अमाउंट्स बीइंग क्लेम्ड। ये यार मेरे को पता है क्यों लगा ये नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स थे ना, इसीलिए। नहीं बट ये तो लिस्ट बनाना पड़ेगा ना, अमाउंट और क्लेम्स का। आगे देख, रिव्यू करस्पॉन्डेंस रिव्यू फ्रॉम प्योरफिट्स करस्पॉन्डिंग, लॉयर्स, मतलब लॉयर्स मत लिख, लीगल एक्चुअली लॉयर्स, ठीक है। लॉयर्स और विद द क्लाइंट्स परमिशन कॉन्टैक्ट लॉयर टू एस्टैब्लिश द लाइकली आउटकम ऑफ हाँ claims being made सही है। reported. Discuss with the lawyers the likelihood of any। अच्छा, ये मैं पोटेंशियल फ्यूचर लीगल केस के बारे में दोनों से बात करूंगा। इंस्पेक्ट बोर्ड मीन्स टू एस्टैब्लिश ठीक बोल, डिटेल ये ऑफ समझा नहीं, पोटेंशियल फ्यूचर क्लेम मतलब मतलब आगे और भी भी क्लेम ऐसे आ कुछ सकता है क्या? प्रॉब्लम्स, हाँ आगे ऐसे अच्छा कोई अच्छा। क्लेम्स आ सकते हैं वैसा। Inspect board minutes हम्म to establish details of the circumstances of this contamination and ascertain the management's review as to the likelihood of the existing claims being will be successful and extent of the possible future legal claims. Compare level of returns and claims against the sales volume of the product। ए बराबर है तेरा, बराबर है तेरा, बराबर है। ये मिल क्या है, The sales volume। कंपेयर द लेवल ऑफ रिटर्न, एक मिनट का, कंपेयर द लेवल ऑफ रिटर्न्स एंड क्लेम टू डेट अगेंस्ट द सेल्स वॉल्यूम एंड द प्रोड्यूस द पोटेंशियल फ्यूचर क्लेम्स। तेरा तेरा हम्म तेरा बराबर था, बस उन्होंने सेल्स वॉल्यूम बोला, मेरे को पता नहीं। हम्म, Review posture and आगे payments क्या? for damage settlement and compare with any amounts provided at the year end to assess reasonableness of the provision. Review if any payments have been made after the year end to provide. Obtain a written representation from the management that there have been no other contamination incidents and other product liability claims of which management are aware of, which would which provision will be required, may be required। ठीक है। हम्म Will draft the financial statements to establish that legal claims have been appropriately provided for or disclosed in accordance with ISA 37 provisions, contingent liabilities and contingent assets। सही है। ठीक है। ठीक है। ये लास्ट अपना क्वेश्चन जो आता है, अपन ने ये लीगल क्लेम्स तो अपने को आता है अभी, हम्म ये तो इजी लगा। The audit, the final audit is now complete, is now nearing completion। The audit team is satisfied that legal claims received to the date have been appropriately reflected in the financial statements. However, Purrfect Co's lawyer has advised you that it is possible that significant additional legal claims may be made by customers in the future in respect of contamination. The audit engagement partner has confirmed that this is a contingent liability that requires disclosure. The final director has agreed to disclose the some detail disclose some detail of potential claims in the final statements, but the audit team is yet to confirm the adequacy of these disclosures। Acha, discuss with the issue with the man the they discuss the issue and describe the impact of auditor's report of Purrfect Co of both adequate and inadequate disclosure। Adequate रहेगा तो unmodified opinion तू देगा, हम्म and और ये रहेगा तो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। modified मॉडिफाइड में भी opinion, आती modified। मॉडिफाइड में भी आती है क्वालिफाइड, लाइक मटेरियल बट नॉट रिवर्सिबल वाला, बिकॉज गोइंग कंसर्न इफेक्ट Qualified, तो हो नहीं है, right, अमाउंट इतना because the amount is material but not pervasive। Qualified तो ऐसा लिख opinion सकते हैं will ना। be given। नहीं नहीं, पहले अगर इस पे लिख सकते हैं, अगर एडुकेट रहेगा तो लाइक वी विल गिव अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एंड इसमें नो अनमॉडिफाइड ओपिनियन एंड क्या रहेगा, नो फर्दर डिटेल्स। Unmodified opinion will be given, and if the disclosures are adequate, then no additional information should be given। एक बार देख लेते हैं, देख
According to ACCA 37, the possibility of additional legal claims should एक be मिनट। disclosed as contingent liability, as it is possible but not probable and quantifiable. देख ले, देख आज ही अपन ने ये भी किया था ना MCQs में, ये पॉसिबल एंड प्रोबेबल वाला। पॉसिबल एंड पॉसिबल प्रोबेबल रहेगा, वाला। नहीं नहीं, प्रोबेबल रहेगा तो तेरा कंटीजन आएगा, पॉसिबल रहेगा तो नहीं नहीं नहीं। पॉसिबल रहेगा तो कंटिंजेंट आएगा, प्रोबेबल पॉसिबल रहेगा रहेगा तो तो कंटीजन प्रोविजन आएगा, आएगा। प्रोविजन आएगा। अच्छा आज ही किया था, सही है। और अब थोड़ा ऐसा समझ में आ रहा है। हम्म। As the claims might be significant, this issue represent a matter which is fundamental to users' understanding of the final statements. The impact of auditor's report depends on the matter is deemed to be adequately disclosed. The final statement. Again, the issue represents the matter which is fundamental to the users' understanding. ठीक है, नहीं, adequate ये तो लोग ने disclosure ऊपर का का एक किया, बार मेन ना मसाला यहाँ पे। पढ़ लेते हैं। If एडिक्वेट डिस्क्लोजर। Purrfect adequately discloses the issue, then then an unmodified opinion should be given, but the auditor's report should include the emphasis of matter paragraph. ये नहीं आ मैं रहा इसका था। तेरे को पूछ रहा था। This would draw the attention to the disclosure in the financial statement, but cross-referencing the user to the note of financial statement which discloses the possible claims, emphasizing the audit opinion is modified. बराबर। मतलब अगर इम्पोर्टेंट ये एकदम ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कंटेमिनेशन हो गया, तो अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सॉरी, देन एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन विल बी गिवन, लेकिन एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा। आएगा, ठीक है। अभी इनएडिक्वेट अरे डिस्क्लोजर, भाई मैं इफ भूल देयर गया इज नो था ना, डिस्क्लोज। तो मैं तुझे बताना भूल गया था। क्या? तेरा एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ पता है कब आता है? अगर तेरे को कोई स्पेशल अटेंशन देना होगा टू द यूजर, मतलब नहीं, शेयर होल्डर के लिए। लूप होल है। लूप होल है, पता है क्या है वो लूप होल। तेरा एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ तभी आएगा जब तेरे डायरेक्टर्स एडिक्वेटली डिस्क्लोज करेंगे तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एक मिनट। Emphasis of matter paragraph अगर वो only लोग, comes when directors have disclosed everything. अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, इसलिए एडिक्वेट आया। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करते तो ये तो, तो हाँ ना, अलग तो ही आ सही जाता, है। तो अलग ही आ जाता। तो सही है ना। तो ये लोग ने तो ये बोला ना, ऊपर तक में पढ़ना क्या लिखा है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर, मतलब लोग डिस्क्लोजर मेंटेन किया है। हम्म। हम डिस्क्लोजर नहीं मेंटेन किया तो हम क्या करेंगे, ये वैसा है। This would withdraw the attention to disclosure in the financial statements by cross-referencing the user to note the financial statement by disclosing possible claims, emphasizing the audit opinion is modified. ठीक है। Inadequate disclosure, अभी ये एक तेरा मिनट एक बहुत मिनट। इंपॉर्टेंट है। Should be given to auditors. Reports should emphasize of Mariga draw attention of financial statement cost verifying the note of financial to disclose possible claims. Auditors ठीक है, auditor को दिया। ठीक। Inadequate disclosure. If there is no disclosure in the financial statement or disclosure is considered to inadequate, then they indicate that the financial statement are materially misstated. बराबर। As this the lack of adequacy disclosure, this are likely to be material but not pervasive, जिसको मैं बोला था, then a qualified opinion will be given. The basis of qualified opinion paragraph will be added to the auditor's report discussing the matter. The opinion paragraph will be modified to state that except for the failure of adequacy disclosure the matter, the final statement gives true and fair view. And the opinion paragraph will be modified stated. The opinion paragraph will be modified stated. And the opinion paragraph will be modified stating that the audit opinion is qualified except for वो सब बकचोदी बोल दूंगा मैं। देखो ये बता, ये ऑडिट पैराग्राफ में emphasizes of matter पैराग्राफ में डिफरेंस है। Key audit matters ना, देख key audit matters, key audit matters और emphasis of matter paragraph ना। हाँ। आई थिंक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जैसे मैंने बोला, अगर डायरेक्टर्स ने चीजें डिस्क्लोज की हुई तो ही आता है। whereas अगर जब डायरेक्टर्स कोई चीज डिस्क्लोज नहीं करते
और कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा होता है, तभी तेरे की ऑडिट मैटर्स आते हैं। बट मेरा भी चैप्टर वो स्ट्रांग नहीं है, तो वो अपन एक बार देख लेंगे। ठीक है। Area where significant Objective of judgment have qualified. been made by the management as per the auditor. Area of risk is high. Listed company must have subject to regulation management other. ओके देख मैंने इसे नोट्स में क्या लिखा है देख को बताता हूँ। सुन मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा लाइक जो एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में शेयर होल्डर्स के लिए देता है जो डायरेक्टर को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है जैसे वो डिस्क्लोजर मेंशन करता है बराबर तो वही ऑडिटर बस बताता है। बराबर। और की मैटर ऑडिटर में जो ऑडिटर को लगता है कि इंपॉर्टेंट है कि ये चेंजेस करने चाहिए ये होना चाहिए वो शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। बोला ना मैं तेरे को, जब ठीक है डायरेक्टर डिस्क्लोज करते हैं और ऑडिटर को भी लगता है कि ये चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। और पैसा जब मैटर ऑडिटर रहेगा। डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तब की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। बट की ऑडिट मैटर्स हम्म, पैराग्राफ आता किसके बाद है? किसके बाद आता है? ऑर्डर में ये क्या डिपेंड है? करता है ये डिपेंड ऑर्डर में देखिएगा ऑर्डर तो के एम्फोसिस ऑफ जजमेंट पे। मैटर फिर की ऑडिट ऑर्डर के जजमेंट पे जजमेंट पे। डिपेंड करता है, सर ने बोला था। यस। अगर उसको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसका पॉइंट तो बाद में आएगा अगर लगता है नहीं मेरा इंपॉर्टेंट है पॉइंट तो पहले आएगा। सर ने बोला था। मैम यार, बहुत सही राहुल, बहुत सही। आज का तो सही हुआ। बहुत कुछ जैसे सीखा। यहाँ पे एग्जांपल लिखा जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कंटीजेंट लाइबिलिटी जो होता है यहाँ पे लीगल क्लेम्स वो हम यहाँ पे ईओएम में डालते हैं। किसमें डालते हैं? की ओ की ऑडिट मैटर्स। नहीं एम्फोसिस ऑफ मैटर में। एम्फोसिस ऑफ मैटर में डालते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज को। हाँ की ऑडिट में तो मतलब बोलते हैं ना एकदम जिससे तेरा गोइंग कंसर्न अफेक्ट ही हो जाए वो डालते हैं अपन। तो इनका नोट्स की फोटो भेजना, मैंने शायद बनाए नहीं होंगे, भेज दे, मैं लिख देता हूँ। ठीक है तो सेंड कर दे। सही मीटिंग एक है। बार खत्म होता है तो सेंड कर दे। देखो मीटिंग पूरा खत्म हो। चाहिए कि खाली उसी का चाहिए।